अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों का 10th क्लास बायोलॉजी का शॉर्ट क्वेश्चंस के गेस्ट पेपर चैप्टर वाइज हम डिस्कस करेंगे कि कौन से जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं और मैं आपको बताऊंगा तमाम तर तफसीलात। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि तमाम तर आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएँ और अगर आप इनको ज़हन नशीन कर लेते हैं तो आप लोग अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। फर्दर एनी डिले बढ़ते हैं आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस के जाने। पहला जो चैप्टर है आप लोगों का उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं। डिफाइन बायोलॉजी एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, व्हाट इज पैरासाइट्स, डिफाइन पैरास्टोलॉजी, राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ बू अली सीना, राइट two inventions of Jabir bin Hayyan, write the names of groups of biomolecules, give example, write difference between population and community, what is biosphere level, difference between cell level and tissue level, what is meant by biotechnology, biotechnology help, is mankind justify, what is immunology, difference between physiology and taxonomy, what is meant by bioelements, what is species, write an example, difference between vegetative organs and reproductive organs, difference between micromolecules और macromolecules, give an example। अगला जो चैप्टर है आप लोगों का वो है solving biological problem, define, इसका जो important पहला short question है define scientific method, write down name of steps of biological method, difference between qualitative and quantitative observation, write two characteristics of hypothesis, write two observations of AFA King, why do we itching after being mosquito, how Aedes mosquito spreads dengue fever, difference between ratio and proportion, explain deduction, explain biological law, define theory and law, how data organization, explain symbol of dengue fever। फिर अगला जो चैप्टर है वो है बायोडाइवर्सिटी, चैप्टर नंबर 3। इसके जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, what is the base of classification, explain, define species, define bionomiculture and method, difference between taxonomy and systematics, difference between flora and fauna, write down the simple classification of human, write three characteristics of kingdom Munira, how fungi differ from other plants, what is meant by endangered species and any two endangered species in Pakistan, difference between extinct and endangered species, what is meant by deforestation, give two reasons of exclusion of kingdom fungi from kingdom plantae। फिर अगला जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 4 है सेल्स एंड टिश्यूज का। इसका जो पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज माइक्रोग्राफ, डिफरेंस बिटवीन magnification and resolution of a microscope, write down the principles of cell theory, what is difference between primary wall and secondary wall, describe the contribution of Mathlas, Sheldon and Thornton Shawn in formation of cell theory, draw the diagram of mitochondria, write the name of its two parts, write down functions of lysosomes, write the act reverse osmosis, difference between diffusion and osmosis, what is meant by hypertonic and hypotonic solutions, what is endosis, give types, difference between endosis and exosis, what are the secretarian tissues, give two function performed by कीप्टोप्लाज्म। फिर अगला जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 5 है। इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन क्रोमेन एंड क्रोमोसोम, डिफाइन G0 phase, define mitosis, which cells it occurs, difference between karyogenics and cytosinics। फिर उसके साथ साथ अगला जो इंपॉर्टेंट है, डिफाइन ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, डिफाइन मेटासिस, डिफाइन म्यूसिस, which biological discover meiosis, difference between meiosis and mitosis, define crossing over, difference between apoptosis and neurosis। फिर उसके साथ साथ अगला जो है, एक्सप्लेन एस फेज सेल साइकिल, डिफाइन ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, डिफरेंस बिटवीन सोमैटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल डिवीजन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिर उसके साथ साथ अगला जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 6 है, एंजाइम्स वाला, और डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी, हाउ एंजाइम्स इफेक्ट ऑन इट, राइट नेम ऑफ 4 एंजाइम्स, define metabolism and its two types, what is metabolic pathways, difference between perovskite group and coenzyme। फिर उसके साथ what is meant by active site enzyme, define optimum temperature,
हाउ pH affects enzymes action, give an example, introduce fit model of enzyme action and more acceptable। फिर बाकी जो है शॉर्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। फिर अगला जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 7 है। What is discovered by Carl Lotham? Write down the 3 submits of ATP. What is meant by bioenergetics? What is synthesis and write it is equation. What is photolysis of water? Define respiration and cellular respiration. Name the compound produced during respiration. Define alcoholic formation with equation. What is meant by anaerobies? फिर उसके साथ define yellow gases, difference between photosynthesis and respiration, compare aerobic and anaerobic respiration with respect to site of occurrence and final products। फिर उसके साथ जो है चैप्टर नंबर 8 है वो उसके जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन न्यूट्रिशन, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, मैग्नीशियम ऑन द प्लांट्स, व्हाट इज मेंट बाय saturated and unsaturated fatty acid, if we supply inorganic and organic fertilizer to plants, which one will be the first available to the plant for the intake and why, difference between fat soluble water and soluble vitamin, write down the symptoms of scurry। और ये आगे भी जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो देख सकते हैं आप। फिर उसके साथ साथ अगला जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 9 है, ट्रांसपोर्ट, और इसमें जो इंपॉर्टेंट है, write the function of root in plant, what is meant by wind, write its effects and transpiration, difference between source and sink, what do you mean by blood right composition of a healthy man, how is plasma separated from blood, how many types of cells are found in blood, write 2 names of these, why dengue fever is dangerous for human, write symptoms of dengue fever। बाकी जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है वो देख सकते हैं आप आपकी स्क्रीन पे। ये वो तमाम शॉर्ट क्वेश्चन से बायोलॉजी के तमाम चैप्टर्स के जिनको आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आप लोग अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं अपने पेपर में, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लें और इसी पैटर्न पर तैयारी करें ताकि आप लोग अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए वीडियो मुफीद साबित हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि तमाम तालीम से मुतालिक खबरें बर वक्त आप तक पहुंच सकें।